Okay class, in the last video I explained up to question number 5th, the unitary method chapter exercise. Now moving on further, we'll be doing question number 6th onwards now. See, now from this 6th onwards, I'll be teaching you these questions with a new method which can be applied for all the questions also. Till 5th, the method which I taught you, this method I think you know that you are studying this since from class 4th. Yes, now this from question number 6th onwards, I'm going to teach you the new method that is called the arrow method. What it is called? Arrow method. You can see on the screen. Using the arrows, you have to solve the questions. So let us read the question first. First, what is the first part? 3 men do a job in 8 days. There are 3 men who are completing their job in 8 days. So the question is asking, how long will 4 men take to finish the job? Now, if there are 4 men, then those 4 men will complete the job in how many days? Now, in this arrow method, what is the first step you have to do? Read the question very carefully. After every full stop, after reading each and every sentence, translate it into Hindi, means understand the grammar of the sentence. And then after understanding the full question, the grammar of the full question, you have to decide this question is of which variation. Now, what is variation? There are 2 variations which you have to use in this method, in this exercise, that is direct variation or indirect variation. Now let me explain you what is the direct variation and what is indirect variation. See, for example, suppose you purchase a register. Okay, you have purchased a register and you ask the shopkeeper first, what is the cost of one register? He says it is 20 rupees. And you asked him to give 4 registers. Now you know very well what will be the cost of 4 registers. It will be 80 rupees. So now do the comparison between the cost of 1 register and the cost of 4 registers. How to compare? See, 1 register का cost कम था, means जब आपने कम रजिस्टर्स लिए तो आपने शॉपकीपर को मनी भी कम दिया. बट when you took more registers, means more than 1, you took 4 registers, then you also increased the amount. 20 से आपका अमाउंट हो गया 80 रुपीज़. मतलब अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसका मनी भी बढ़ रहा है, मीन्स बोथ आर इंक्रीजिंग. क्वांटिटी भी बढ़ी है तो मनी भी बढ़ा है, बोथ आर इंक्रीजिंग. सो दिस मेथड, दिस वेरिएशन is called direct variation. Okay, now the next second variation is what? Indirect variation. What is indirect variation? Again, let us take one example of it. Suppose you have to complete your homework given by your teacher. Okay, now what you people do, as always, students' habit is what? They never finish their daily work every day. What they do? We don't have the physics period today, we will do it after 1 day or 2 days. Then what we do? We make our work so pending. Yes, you make your work pending. Okay, मतलब काम बढ़ता जा रहा है. Okay, now the period is coming nearer to you, means the day in which physics period falls, it is coming nearer to you, and your work is going on pending, means you're having more and more work. Now one day finally, the next day you have a period, one day finally you decided that I have to do, and you do not have more time to finish it because the next day you have your physics period. You do not have more time to finish it, but the work is very high. Yes, दिन कम हो गए और काम हमारा ज़्यादा हो गया. Yes, so this is what the change is there in this. एक चीज़ कम है तो एक चीज़ ज़्यादा है. सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इनडायरेक्ट वेरिएशन. मतलब किसी काम को करने के लिए अगर आपने लोग ज़्यादा लगा दिए,
मीन्स अगर आपने उस काम को करने के लिए, अपना होमवर्क फिनिश करने के लिए, सपोज यू हैव टेकन हेल्प फ्रॉम योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर, तो वो काम आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा. यस, एंड सपोज you what you are for example, take another more example. Suppose आपने किसी काम को, जो आपका सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी बोल रहा है, आपने किसी काम को करने के लिए लोग ज़्यादा लगा दिए, तो जाहिर सी बात है वो काम आपका कम दिन में ख़त्म होगा. और अगर आपने लोग कम दिए किसी काम को करने के लिए, तो वो काम ज़्यादा दिन चलेगा. सो men and days, the relation between men and days for doing any job or a work is of indirect relation. So this question number 6 is of indirect relation. Why? You can see that 3 men were doing the work in 8 days. Now the question is asking for 4 men. मतलब पहले 3 men थे, अब men कम ज़्यादा हो गए. सॉरी, जब men कम होंगे तो दिन हमें ज़्यादा लगेंगे. जब men ज़्यादा हो जाएंगे तो वो काम हमारा कम दिन में ख़त्म होगा. सो दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट रिलेशन. So what you have to do first, see these are the steps which you have to remember. After reading the question, first you have to take let. What you have to take as a let, what the question is asking. The question is asking here, how long will 4 men take to finish the job? Means you have to find out the number of days taken by 4 men. So let the number of days taken by 4 men to finish the job be X. Okay, first we have written this sentence. 4 men suppose X दिन में काम खत्म कर रहे हैं. Now you have to make 2 columns. Why 2? Because in this question आप देखिए किन चीज़ों की वैल्यू गिवन है आपको. नंबर्स किस किस के हैं. देखो 2 चीज़ों के नंबर है. 3 men, एक क्वांटिटी अलग है, और 8 days. सिर्फ इन 2 चीज़ों की तो वैल्यू है आपके पास. 3 वो नंबर किसके लिए? men के लिए. 8 नंबर किसके लिए? days के लिए. So that is why according to that you have to make 2 columns. 1 column for men and another column for days. After making 2 columns, start filling the values in it. First sentence क्या था? 3 men do a job in 8 days. So men की जगह हम 3 लिखेंगे. At the place of days we will write 8. Now what the second line was saying, how long will 4 men take to finish the job? Now at the place of men you have to write 4. And what let we have taken? Let 4 men finish the job in X days. तो 4 men के साथ कितने days चल रहे हैं? X. 3 men के साथ कितने days चल रहे थे? 8. So वो values we have put. Okay, so this is done in the column. Now since this is the arrow method, so we have to put the arrow. Now be careful and listen how we put the arrow in this. जिस कॉलम में X लिखा है and we have written X in days column, उसका एरो हमेशा नीचे रहेगा. Means the arrow head will be downwards. In which column? Where you write X. X के कॉलम का एरो is always downward. अच्छा, अब आते हैं दूसरे कॉलम की बात, which is men. उसका कॉलम कैसे, उस कॉलम का एरो हम कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के आपने ये पहचाना था दैट द क्वेश्चन इज ऑफ इनडायरेक्ट रिलेशन. यस, इनडायरेक्ट वेरिएशन था, मतलब एक चीज़ ज़्यादा तो दूसरी चीज़ कम, या एक चीज़ कम तो दूसरी चीज़ ज़्यादा. मीन्स दिस इज ऑफ इनडायरेक्ट रिलेशन. और इनडायरेक्ट रिलेशन में इनडायरेक्ट रिलेशन में एक्स का एरो तो हमेशा नीचे रहता है, तो दूसरा एरो अपने आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. एक्स का नीचे है तो दूसरे कॉलम का एरो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में शो करना है. वाई? आई सेड ना, इनडायरेक्ट है, एक कम एक ज़्यादा, मतलब ऑपोजिट चलना है. एक अगर नीचे है तो एक ऊपर जाएगा. ओके, नाउ there is only thing is not to put the arrow. Now how you have to solve it? See, now I have made the fraction. You can see how you have to make the fraction. Where is your arrowhead? This is called the arrowhead. I hope you know that what is the arrowhead. This is called the arrowhead. Arrowhead is always numerator. You can see. So numerator is 3.
Here arrowhead is towards x, so numerator is x. So जो arrowhead होता है that is our numerator. यानी कि ये वाला fraction क्या बनेगा 3/4. Here arrowhead is x, so x will be numerator. So what will be the fraction? x/8. After putting the arrows, you have to make the fractions. और fraction बनाते समय the most important thing you should remember about the arrowhead. Arrowhead जिस नंबर की तरफ है that should be always numerator. तो दूसरा नंबर अपने आप डिनोमिनेटर में जाएगा. yes. Now after forming the fractions, put equals to sign in between. First column का fraction ये रहा, second column का fraction ये रहा, and equals to sign in between. And then simply what you have to do, you have solved this in fractions chapter using algebra. You have to do cross multiply method. 4 will be multiplied with x and 3 will be multiplied with 8. So for finding the value of x, 4 has to come here. It will be divided. It will divide the 24 number. So x is 6. So what we took as x was the number of days taken by 4 men to finish the job. So 4 men will finish the job in 6 days. I hope class it is clear. Okay, if not, then you can message me and you can ask me. Sixth question, second part also is the same method. Again, workers and days are given. किसी काम को करने के लिए ज़्यादा वर्कर आप लगाएंगे तो दिन कम लगेंगे. किसी काम को करने के लिए अगर आप कम वर्कर लगाएंगे तो वो काम ज़्यादा दिन में ख़त्म होगा. उल्टा रिलेशन हो गया है. यस, एक चीज़ ज़्यादा है, दूसरी चीज़ कम है. उल्टा रिलेशन हो गया ना. सो दिस इज ऑल्सो ऑफ इनडायरेक्ट रिलेशन. सो सेम मेथड यू हैव टू अप्लाई. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. See, 8 people consume a food in 30 days. 8 लोग थे. 8 लोगों ने जो खाना था कितने दिन तक खाना खाया? 30 दिन के लिए. मतलब घर में या कहीं पर भी वो लोग गए तो 8 लोगों को 30 दिन तक खाना खिला सकते हैं हम. ठीक है, हमारा खाना कितने दिन चल जाएगा 8 लोगों के लिए? 30 दिन तक. सो हाउ मेनी पीपल विल कंज्यूम द फूड इन 20 days. Now the question is asking कि 20 दिन तक हम कितने लोगों को खिला पाएंगे. ओके, 30 दिन तक हम 8 लोगों को खिला सकते हैं, तो 20 दिन तक हम कितने लोगों को खिला पाएंगे. Now here also after reading you have to first check whether it is of direct relation or indirect relation. Now for example I give, suppose your father used to bring the ration every month. Father or mother brings the ration at home for full 1 month. Yes, पापा राशन लेके आते हैं. Now in some day what happens, cousins have come, मासी has come or auntie has come or uncle has come. Okay, राशन हमने कितने, पापा ने कितने लोगों के लिए भरा? Suppose you are a family of 5 people. Now your auntie has come with this family. Suppose auntie is having 3 members in a family. Now 5 people के लिए जो पापा ने राशन भरा तो वो क्या था, पूरे दिन चल जा रहा था. Yes, अब जब members बढ़ गए तो जो राशन पापा ने पूरे महीने के लिए भरा था, obviously that ration will not go for those many days. क्यों? क्योंकि मासी या आंटी के आने से घर के मेंबर्स बढ़ गए, और जब घर के फैमिली मेंबर्स बढ़ गए तो हमारा खाना कम दिन चलेगा. यस, सो मेंबर्स बढ़ जाते हैं तो खाना कम दिन चलता है, और जब मेंबर्स कम हो जाते हैं तो खाना ज़्यादा दिन चलता है. सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग मोर, another thing less. So this is also indirect relation. So first you have to write let what the question is asking. So let x number of people consume the stock of food in 20 days. Okay, this was the question. This only the question was asking कि 20 days तक हम कितने लोगों को खाना खिला सकते हैं. So suppose we take x people can eat the food for 20 days. Now here also you have to make 2 columns. So you have to decide किन चीज़ों की वैल्यू दी है क्वेश्चन ने. एक तो डेज की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है, और एक
प्यूपल की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू है. सो 2 columns are for days and pupil. So in the first sentence what it was written, 8 pupil 30 days. So you can see at the place of pupil 8 we will write, at the place of days we will write 30, क्योंकि 8 लोग 30 दिन के लिए खाना खा रहे थे. Now next 20 days it is given, तो और 20 days के लिए कितने लोग हमने लिए हैं, you can see in the let x लोग हमने लिए कि 20 दिन को हम x लोगों को खाना खिला रहे हैं. तो at the place of days write 20 and pupil x. Now in the beginning only we decided it is of indirect relation. Yes, मीन्स दोनों के एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे. सबसे पहले एरो हम किस कॉलम का लगाते हैं, एक्स वाले कॉलम का. रिमेंबर दैट इफ यू विल नॉट गो स्टेप बाय स्टेप you will get the answers wrong. So first you have to put the arrow of x column. X column is in this pupil. So इसका एरो हमेशा नीचे रहेगा, चाहे क्वेश्चन डायरेक्ट रिलेशन का है चाहे क्वेश्चन इनडायरेक्ट रिलेशन का है. x का एरो इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. अब ये इनडायरेक्ट रिलेशन है उल्टा, एक कम एक ज्यादा, तो एरो भी उल्टे लगेंगे, एक नीचे तो एक ऊपर. ठीक है, इसका एरो हेड ऊपर आएगा. नाउ मेक द फ्रैक्शन. एरो हेड इज ऑलवेज द न्यूमरेटर. तो पहला फ्रैक्शन हो गया 30/20, दूसरा फ्रैक्शन हो गया x/8 बिकॉज एरो हेड x की तरफ है, x/8 equals to sign always in between, then cross multiply and find the value of x using algebra. So x will be 12. So 12 pupil will consume the food in 20 days. Okay, I hope it is clear, class. Now the next question we'll do, that is question number 9. Ninth question, I am explaining both the parts. Okay, I'm explaining both the parts. Chalo. There is a hostel having enough food to feed 250 students for 30 days. How long will the food last for 300 students? Same method which we applied in question number 8. Same. Okay, let the food finishes in X days for 300 students. Here also the value was given for students and days. So 2 columns will be of students and days. Same method, indirect relation, because it is also asking about the pupil and days and for eating food. तो उल्टा रिलेशन रहता है इसमें हमेशा. ज़्यादा लोग होंगे तो खाना कम दिन चलेगा, कम लोग होंगे तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा. The same method you can see I have done. Indirect relation, opposite arrows, then arrowhead is always numerator and the next will be the denominator, and you can solve it. Okay, you can see and you can solve it. Now the second part, let's move on to the second part of the question number 9 only. There are 64 children at a camp who have provision for 9 days. Provision means वहाँ पे खाना पीना जो भी उनका रहना कितने दिन के लिए, 9 days के लिए. So 9 days can be given proper food for 64 children. Now suppose 8 more children join the camp. Now 8 more children means children बढ़ गए, पहले कितने थे 64. 8 more joined means अब कितने हो गए, 64 plus 8 72. So now the question is asking, तो उन 72 children के लिए कितने दिन तक खाना चलेगा. Again this is of indirect. Yes, this is also provision means it is in the hostel providing the facilities of food and shelter, like that only. ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो खाना वो कम दिन चला पाएंगे, कम लोग होंगे हॉस्टल में तो खाना ज़्यादा दिन चला पाएंगे. द सेम थिंग, बट यू बी केयरफुल विद दिस वैल्यू ओवर हियर. दे सेड 8 मोर ज्वाइन, मतलब 64 में 8 और आ गए. ओके, विद द सेम मेथड, एरो मेथड, ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्स एरो ऑलवेज डाउनवर्ड, तो दूसरे कॉलम का एरो अपवर्ड आएगा बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट रिलेशन. एंड द सेम मेथड विच वी आर डूइंग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. Now question number 10th. Aditi has enough money for 6 weeks of holidaying if she spends 1400 per week. मतलब अगर एक हफ्ते में 1400 रुपये लगाती है, खर्च करती है, तो वो 6 हफ्ते तक आराम से हॉलीडे स्पेंड कर सकती है बिना मनी ख़त्म किए. हाउ लॉन्ग विल द मनी लास्ट, मतलब कितना मनी, कितने दिन तक मनी चलेगा अगर वो 1050 पर वीक खर्च करे. पहले 1400 कर रही थी, अब उसने खर्चा कम कर दिया कि मैं 1050 खर्चा करती हूँ एक हफ्ते में, तो उसका पैसा कितने दिन तक चलेगा. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट रिलेशन. यस, अरे अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो वो कम दिन चलेगा,
और अगर आप कम पैसा खर्च करोगे तो वो ज़्यादा दिन चलेगा. Yes, when we go for an outing, whenever you go out, you try that not to spend more and more money so that you can stay more, as you can spend more days in holidays. और अगर आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया तो you will have less money to spend. Yes. So the same thing, let the money last for X weeks. For 1050 per week के लिए हमने X ले लिया क्योंकि उसी के लिए the question was asking. So here what are the two columns? The question has given the value of weeks per week, you can say, and sorry, not per week, weeks. They have given the value of weeks and money. 6 weeks के लिए 1400 था और 1050 rupees के लिए कितना वीक है? That we have taken X, you can see. We have understood in the beginning only that it is of indirect relation. ज़्यादा पैसा होगा तो हम अगर हम पैसा कम खर्चा करेंगे तो हम ज़्यादा दिन रुक सकते हैं और अगर हम पैसा ज़्यादा खर्चा करेंगे तो हम कम दिन रुक पाएंगे. सेम वे विद द एरो मेथड. द एरो हेड इज ऑलवेज डाउनवर्ड इन एक्स कॉलम एंड इनडायरेक्ट है तो दूसरे कॉलम में ऑपोजिट ऊपर जाएगा, एक नीचे तो एक ऊपर. ओके, arrowhead का न्यूमरेटर बनाना है. arrowhead is always numerator, so x upon 6 will be the fraction and here the fraction will be 1400 upon 1050. So you solve by cross multiplication and the value of x you got is 8. So 1050 rupees will last for 8 weeks. You can see in the question, see 1400 6 हफ्ते चला था और 1050 8 हफ्ते चल रहा है. दिन बढ़ गए ना, क्यों? क्योंकि उसने मनी खर्चा कम किया. 1400 खर्चा कर रही थी तो सिर्फ 6 हफ्ते चल रहा था, अब 2 हफ्ते और बढ़ गए क्योंकि उसने मनी कम खर्चा किया. ओके, सो आई होप क्लास दिस इज अंडरस्टूड. एंड वन मोर थिंग, द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5th I explained you with the method which you have already studied in 4th class. You can also try those questions with this arrow method also. If you want, you can try with this method also all those questions. So full exercise you can do with the arrow method. Okay, but the most important thing you have to remember is read the question very clearly, understand the grammar very properly, and then decide whether it is direct relation or indirect relation. Then only we will move on to the arrow method. Means then we move on to the next step, that is putting the arrows. Without understanding the relation you cannot do this method. I know this is the new method for you, it is not so easy also, but I hope I have explained you, it is more clear to you. If any student is having any difficulty, you can message me personally on WhatsApp, and if you want you can ask me. So